what? We'll be doing task 1. The task 1 is a diagram, as you can see. This diagram is the most favorite one, and whenever there is an IELTS class, we always prefer to start the task 1 with such simple diagrams. ये डायग्राम किसके बारे में है? ये बता रहा है, अगर आप इमेज पे देखेंगे, ये बता रहा है आपको अबाउट द सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट कैसे बनता है. एंड अगर आप देखिए साथ वाली इमेज, देयर आर 2 images. साथ वाली जो इमेज है दैट इज शोइंग हाउ द कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड, राइट? सो टास्क 1 एंड टास्क 2 में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आइल्स का टास्क 1 है वहां पे आपको डिस्क्राइब करना है प्लस कंपेयर करना है. ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखेंगे, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन. तो ये आप कैसे कर सकते हैं? कुछ वोकैबुलरी इस तरह की यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप डिस्क्रिप्शन भी दे पाएंगे और कंपैरिजन भी कर पाएंगे, राइट? So in this image, if you can see, there are 2 pictures, right? So BP1 में we will be explaining the illustration 1, and BP2 में will be giving the second description, the second illustrations description. And while we are doing that, we can also give some vocabulary words for comparisons. Or the simpler way would be BP1 हो गया, BP2 कर लिया, उसके बाद you give me the para 4, that is conclusion, जिसमें आप इन दोनों में comparison draw कर सकते हैं. Okay? Introduction, that is your para 1. इसमें आपने सिर्फ इमेज की इंट्रोडक्शन देनी है, उसकी फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन देनी शुरू नहीं कर देनी है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. स्टार्ट डूइंग द राइटिंग इट. इंट्रोडक्शन, हाउ विल बी स्टार्टेड? व्हाट इज इट? इट इज अ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन which is highlighting what? Which is highlighting the numerous phases. Phases दिए हुए हैं, stages दी हुई हैं, which is highlighting numerous phases of production of one cement, second concrete. ठीक है? तो starting line would be the given pictorial illustration showcases numerous phases और stages, जो आपका मन है आप वो लिख सकते हैं, concerning cement and concrete production. That's going to be your first line, right? Introduction की. ठीक है? तो second line में क्या देंगे हम? The second line would be कि ये जो concrete production है या cement production है, इनमें materials क्या use हो रहे हैं? या what else you can talk about? बताइए. So we can say, in case of cement, there are 2 raw materials, namely, what are the names of those? You will tell. Limestone and clay. Full stop. Whereas in case of concrete, there are 4 contents
being used, ingredients or raw material. Okay, you can give the names of those also. The last line of introduction would be, in the subsequent paragraphs, there shall be elaborate description of the illustration. Okay, moving ahead. So आपने इंट्रोडक्शन जब भी देनी है टास्क 1 की, आपने सिर्फ बताना है कि टास्क 1 किस चीज के बारे में है. एक तो उसमें प्रोडक्शन किसकी हो रही है, दैट इज कंक्रीट एंड सीमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सीमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या रॉ मटेरियल है या कितने रॉ मटेरियल्स हैं, नेम्स देने हैं, आप दे सकते हैं. नहीं देने हैं तो आप इतना बता सकते हैं कि सीमेंट के केस में देयर आर 2 नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, whereas in concrete there are 4 ingredients. And in the subsequent paragraphs there shall be elaborate description of the image. Right? Let's just go to body para 1. So in case of body para 1, how are we going to start it? टास्क 1 में जब भी आप बॉडी पैरा 1 स्टार्ट करते हैं, देखिए आपको पता है कि किसी तरह की इमेज दी हुई है आपको. वो स्टैटिस्टिकल इमेज है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, या किसी तरह का प्रोसेस है, डायग्राम है. आप उस तरह से यू जस्ट कैन नॉट स्टार्ट इट बाय सेइंग टू बिगिन विद. उस तरह से आप स्टार्ट नहीं करेंगे. हाउ विल यू स्टार्ट इट? एट द glance of first image, right? It can be pointed out that what is the main point which you need to start? It can be pointed out that limestone and clay, are injected into the crusher at stage 1. Full stop. ठीक है? So what are we getting out of it? When these two raw materials, they are injected into the crusher at stage 1, what do we get out of it? We get a powdery substance. Right? Look into the image, you will see that there is a powdery substance. So we can say the powder received or retrieved from stage 1 is then further put into the mix. Okay? So that the connect, पिछली लाइन से कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए. तो या तो आप कनेक्टर लगा के वो कनेक्शन बनाएंगे, या फिर आप अपनी बात में मेंशन करेंगे जो पिछले स्टेज से, स्टेज 1 से हमें मिला है, दैट इज अ पाउडर, दैट इज फर्दर इंजेक्टेड और ट्रांसफर्ड और पुट इनटू मिक्स. राइट जी? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज गोइंग टू बी
the powder produced from stage 1, stage 1 को आप phase 1, first step, ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, at first step is moved further into the mixture. ओके, ठीक है, तो प्रोसेस इसी तरह से चलेगा. आपको यहाँ इवैल्यूएटर को पढ़ते हुए लगना चाहिए कि ये एक प्रोसेस चल रहा है, राइट. व्हाट एल्स वी कैन सी. अब हमने मिक्सचर में डाल दिया उसको. मिक्सचर के बाद क्या हुआ? Yes, it is further transferred to the rotating heater, right? So how can we put this, make the sentence? Further, it is transferred. बिल्कुल normal sentences रखिए. Further, stage mention करेंगे. Can we do that? In the third stage? In the third stage. Can we do that? We can, we should. जहाँ जहाँ पे हम stages बता सकते हैं वहाँ बताएंगे, right? It is important. ठीक है? अभी तक कोई difficulty आ रही है? नहीं ना, समझ में आ रहा है? It's easy. So how are we going to do it? कि या तो आप मेरे को सिंपल सा बता देंगे further at third stage. तो कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ पे इतना कम टाइम होता है, प्रेशर होता है. नहीं, यहाँ तो हम कनेक्टर लगाएंगे. दैट्स फाइन. अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे दैट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि आपने यहाँ पे मेरे को कनेक्टर दे दिया है. ठीक है. फर्दर इन द फॉलोइंग स्टेप इस तरह से भी लिख सकते हैं. अगर आपको काउंट नहीं लिखना है तो फर्दर या इन द फॉलोइंग स्टेप. फर्दर the powder is transferred. Where is it transferred? Into rotating heater. Right जी? अब वहां पे कुछ हो रहा है ना. अगर आप देखिए तो रोटेटिंग हीटर के पास वहां पे एक तो रोटेशन का साइन बना हुआ है, उसके लिए आपने बता दिया रोटेटिंग हीटर. सेकेंड थिंग विच इज इंडिकेटिंग कि रोटेटिंग हीटर की तरफ जा रही है, दैट इज द हीट. सो यहीं पे यू कैन गिव मी अ सेमीकोलन. इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी सेमीकोलन्स यू कैन इजीली से कॉमा whereby heat is being produced. No, it's being used. Heat is being utilized for what? It's being thrown away towards what? Rotating heater, isn't it? You have the sample answers now. You see there? The language there is very simple. You can see there. What is it? That's used. Don't use very heavy and ambiguous vocabulary in task 1. Use very descriptive words, comparative words. अगर बहुत अजीब से words produced, no, produced is wrong word here. The word would be used or utilized. Is used. That's it. ठीक है? Moving ahead. अब देखिए आपने कहाँ तक इसको यूज तक, मतलब heat has been sent into the rotating heater. Moving further, what is happening? At the next stage, in the following stage, what is it using? In the following stage, लिखिए
in the following stage, the material is being grinded, isn't it? Grinding to make a final. Absolutely. Or in the next stage, grinder is being utilized to produce the final product, that is cement. ज़्यादा formal क्या लग रहा है? Second sentence. So we'll write that. In the following stage, the grinder is utilized to retrieve or to produce the final product, comma, cement. Lastly, it is packed into bags. It is packed into bags and sent to the market. It is ready to be sent to the market or the end user. Okay? First term, BP1 done. Let's move to BP2. So how do we start BP2? जो बच्चे टास्क 1 मास्टर कर लेते हैं, they can very well score 7.5, 8, 8.5 in writing easily. So you have to master yourself for task 1. Moving ahead. ठीक है जी, यहाँ तो ये यूज करेंगे, यहाँ पे यूज है मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड इमेज. ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट दे रहा है. ओके, सो मूविंग towards second image. So moving towards second image, it can be noted that क्या है second image? The second image is about concrete production, right? So the methodology of concrete production includes what? That all the 4 ingredients, they are put into concrete mixture, but all those 4 ingredients or raw materials, they are put into the concrete mixture in a specific quantity, proportion or ratio. Okay, so that word of specific quantity, volume, ratio, proportion, that has to be there. उसने वही देखना है evaluator ने. ठीक है जी, ये वर्ड आप ऊपर नहीं इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है. यही बच्चे गलती करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको डिस्क्रिप्शन में देनी होती है वो ऊपर इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में दे देते हैं. सो यू हैव टू अवॉइड दैट मिस्टेक. जो डिस्क्रिप्शंस हैं इमेज की वो BP1 और BP2 में रहेंगी. चलिए, मूविंग अहेड टुवर्ड्स सेकंड इमेज, इट कैन be observed that there are 4 ingredients, okay, which are put into concrete mixture. Is it a mixer only? Mixer. Yeah, concrete mixer, right?
So when you put all those ingredients into concrete mixer, these ingredients or raw materials are, what are the raw materials? Cement, water, sand, and small stones. Okay. Gravel. Absolutely. So you will give me the names of 4. Okay? Are used in specific quantity. What is the quantity? Let's just see. Quantity, that is 15%. 15. If you have written cement पहले तो 15, ठीक है? Water, तो यहाँ पे कॉमा के बाद water की क्या है? 10%. अगर आपने उसके बाद sand लिखा है तो 25%. And next is gravel. How much is gravel? 50% respectively. Okay. So I have deliberately tried to increase words. That's why I am trying to make 2 sentences. Otherwise, एक sentence में हो सकता था ये. Okay. So try to when in process and in maths this is a problem कि बच्चों के word limit पूरी नहीं होती है. So you have to exaggerate a bit. Okay. Exaggeration में थोड़ी सी repetition हो सकती है. हमें जितनी हो सके उसको avoid करना है. So you have to exaggerate so that your words at least देखिए 150 का target होता है minimum words का, पर हमने 170 लेके चलना है. Always remember that. Okay, keeping that in mind, we have to elaborate. थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा. Right जी? तो आपने ये डाल दिया concrete mixture में, ये अपना ingredients का mixture. Now, what will you receive? The end product of concrete. Once this is rotated, what is received? Concrete. Let's jump to that's very, very important. To encapsulate the above mentioned, what was above mentioned? Diagram. Absolutely. These are the diagrams or illustrations or pictures, okay, which you described. So above mentioned diagrams or we can say illustrations. That's more formal. ठीक है? Done? You can mark it on your sample answers. I don't prefer or even for that matter कोई भी prefer नहीं करता है to sum up. Please. To conclude. It's a big no-no. ठीक है? So to encapsulate the above mentioned illustrations, what we can jot down or what can we say? So it can be jotted out. यहाँ comma आएगा please. It can be jotted that how many stages, if we have to clearly find out, there were in cement production? First, when limestone and clay was injected into the crusher, first stage. Second, when the powder was received and it was injected into, transferred into the mixture. Second. The third, when the rotating heater, right? Fourth, grinder. Fifth, packing it into
back. So there are 5 stages where the whole process is Done. absolutely. Whereas in concrete production, we can see there is only one stage wherein all the ingredients or the raw material, the 4 raw materials are put into mixer and a mixture which is turned into final product of concrete. Right जी? So we'll be comparing the stages. Comparison start हो गया. इधर 5 stages है, सामने 1 stage है. एक तो ये comparison हो गया. दूसरा comparison क्या हो सकता है? Definitely this is a cement production is intricate one. It has more stages, whereas concrete is simpler, just 1 stage, डाला और done. और क्या हो सकता है comparison? Number of raw materials. अगर ये process intricate है cement production का, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही raw materials चाहिए, right? On the contrary, concrete में कितने चाहिए? 4 and that too in specific quantity, ratio, proportion. ठीक है? So this is second ground for comparison. Done जी? Yes. So we'll jot, it can be jotted that in case of cement manufacture, five stages are involved. However, in case of concrete, there is only so this word is important, very very important. Please underline in contrast. It is highlighting that we are comparing something, right? In contrast, concrete requires 4 different raw materials. 4 distinct raw materials in specific quantity. क्वांटिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, आपकी मर्जी है आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं. अगर क्वांटिटी ऊपर कहीं यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे रेशियो या प्रोपोर्शन यूज कीजिए. ओके, बट सीमेंट demands, requires, utilizes only 2 that's it. Okay, so whenever there is a process, it's the easiest in task 1, first thing. However, definitely it's easiest, but the thing is the word limit is a problem area because you tend to complete it in very short span and इतने कम words आपको लगते हैं कि आपको problem रहता है कि how to complete 150 words. Always keep the target of 170 words and that only you can do through exaggeration. थोड़ा सा exaggerate करेंगे, connectors proper लगाएंगे, okay? अपने
प्रीवियस सेंटेंस को सक्सीडिंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे, अगले और पिछले सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है। BP1 इंट्रोडक्शन, BP2 कंक्लूजन, इनके कनेक्टर्स, स्टार्टिंग कनेक्टर्स का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल टू एनकैप्सुलेट की जगह आप और क्या यूज कर सकते हैं? टू Hydrate. recapitulate. It's a beautiful word to sum up something, to recapitulate. Okay, right? So we'll end today's session.